सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। Hello and a very good evening to all the viewers watching NCRT's live interactive session. This is Simran Singh and you have all connected with us through eVidya channel number 6 to 12. Now it's around 5 p.m. on your watch and we have our special segment of Sahyog for all of you. So let me apprise you that Sahyog and Paricharcha, they are two special sessions under the Ministry of Education's initiative, that is MANODARPAN, as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And viewers, here we come up with certain important elements and discussions for all of you, aimed at providing guidance for mental well-being and psychosocial support to all the students, the audiences and the viewers watching our programs. So the topic for the day is fostering identity development in adolescence. So what is identity development and why is it important that we are having this topic through this platform? So providing us more insights into the conversation, we have our two guests joined with us through online modality. But before introducing you to the guest, here is an important piece of information for all of you. We are proud of the fact that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in this year, that's 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency is a watershed moment in her history, as it seeks to play a very important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of everyone, and in doing so, manifesting the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or should I say, the world is one family. And viewers, let me introduce you to the experts for the program. We have with us Dr. Kalpana Maski from RIE NCRT Bhopal. Namaskar, ma'am. आपका स्वागत है इस चर्चा में. We also have with us our practicing counselor, Ms. Sarika Raghuvanshi. Namaskar, ma'am. We welcome you as well. So viewers, in the live session, if you have any of the queries, you know the contact number through which you can reach out to us. The specific national helpline number for MANODARPAN initiative programs, that are Sahyog and Paricharcha, is right there on the screen. It is 844-844-0632. Besides, we have our PM eVidya IVRS number for all of you, that is 8800-440-559. And you can always reach out to us through the mail ID flashing on your screens, particularly for Sahyog programs. It is sahyog.ncrt@ciet.nic.in. And as we are discussing about fostering identity or the development of identity, particularly when we talk about adolescents. So here quickly, Kalpana ma'am, I'll request you to please introduce the topic to the viewers, that how and what do we mean by identity, and particularly in the sense, or how is that associated with adolescents? Thank you, ma'am. Thank you so much. Very good evening, everyone. Today's topic is fostering healthy identity among adolescents. Actually, first we must all know what identity is. मेरी पहचान क्या है? Who am I? इसको जानना है. तो बच्चे को जो adolescent age है, we all know that this age lies from age of 11 till the age of 19, and during this age, the children or the adolescent are in the transition phase from childhood towards the adulthood. So they are in the phase when they want to know their self. Who am I? For what am I? What I want to do? What is my identity in the society, in the family, in the school? So how we can help them in knowing their identity? Because if we define identity in simple words, we can say it is a set of qualities, behavioral traits, their personality traits, their values, their appearance, and the expressions of an individual by which they can be identified in the family, in the society, or in the
country. So what we can do for them, and if we really want to provide or give them opportunity for identity development, they must know where they have to identify and where they can find themselves in terms of personal identity, social identity, and cultural identity. What personal identity is? These are the types of identity because the adolescent is in the home, is in the society, is in the school, or among the स्टेट और द कंट्री. तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, वो उसकी सोशल आइडेंटिटी क्या है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, उसकी वो पहचान कैसे करेगा. अगर मैं कहूँ कि जो एडोलसेंट एज है उसमें पर्सनल आइडेंटिटी जो भी हमने कहा उसका फिजिकल ट्रेट है, उसके बिहेवियरल ट्रेट है, उसका अपियरेंस है, तो पर्सनल आइडेंटिटी इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स कि मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरी पोटेंशियलिटी क्या है, मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट क्या है, व्हाट वैल्यूज एम आई. तो उससे वो अपनी पहचान सोसाइटी में बनाने की कोशिश करता है जब वो खुद को जानेगा कि हु एम आई और व्हाट एम आई, और मुझे क्या इस सोसाइटी में मेरी एग्जिस्टेंस होगी और मुझे आगे कैसे लेके जाना है, सो दैट जब वो एडल्टहुड को अटेन करे तो उसकी आइडेंटिटी डेवलप हो. नो डाउट आइडेंटिटी development is a flexible process. We can't say the whole identity is developed among the adolescent. And we can say adolescent is the age of wonder and blunder because they can do anything in this age as they are full of energy, enormous energy. They are having very high level of energy. So we can say it in terms of personal identity, it is a composite of their personality traits, beliefs, values, physical attributes, abilities, habits, etc., by which they can identify it among their group or as an individual. The second one is the social identity. Social identity, how we can find his social identity? According to the race to which he or she belongs, ethnicity, gender, sex, socio-economic status, social group, religious belief. On all these bases, they can develop their social identity. And social identity is really a very important task in developing their own personality identity because it plays a very important role in at the adolescent age. The third is the cultural identity. Cultural identity, for example, we all are Indian. One of my identity is I am Indian. So when I am talking about cultural identity, we have some specific culture as compared to other countries. And in terms we can say cultural identity is an individual feeling that they belong to a group with its own distinct culture that unites the individual at oneness, and it is a part of their self-conception and self-perception, which includes, as I have given you the example, nationality, ethnicity, religion, social class, and the social group. So all these three identities help the adolescents to develop their identity among the society. Among that, if we talk about what development or the identity formation we need to develop, and identity development is a very slow, gradual process and lengthy process. We can't say it is begun at the adolescent or it may end with the adolescent age. No, it starts with the adolescent age and it may continue even in adulthood because during this period the identity is shaped and reshaped and it may change many times because he is not at all able to decide what is good or bad for him. He is not able to take decisions appropriately. So he is changing his identity, or we can say shaping or reshaping their identity. During this phase, many changes are taking place like physical changes, emotional changes, cognitive development is also going to take place, socio-emotional development is taking place. So during this period, we can say having all these changes in terms of physical features, hormonal changes, emotional changes, cognitive development. Cognitive development changes means what the adolescent children think that they can do everything. Whatever they think is right for them.
they are moving away from their parents and the influence is very less, and they are influencing with their peer groups. इस एज में ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं वही सही है, जो मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार रोक रहे हैं वो सही नहीं है, तो व्हाट शुड आई डू? तो ही इज वेरी मच कंफ्यूज, दिस इज द एज ऑफ कंफ्यूजन ऑल्सो। तो कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है और वो एक एडल्टहुड की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो मेचोरिटी इसी चीज से आती है कि जो डिसीजन वो ले रहे हैं कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, और वो सीखते सीखते एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं। And identity is not at all stable throughout the life. It is changing as per the situations and the phases of life. As the maturity gets, stability comes in the identity. Thank you. जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और हम जैसे आइडेंटिटी डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर सारिका मैम भी जुड़ी हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आइडेंटिटी डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, आइडेंटिटी डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन एडोलेसेंस? सारिका जी as ma'am said that identity development is a developmental task during adolescence age, and there are two processes that contribute in this. First is exploration, and then it leads to commitment. But before talking about exploration and commitment, I would want to highlight one aspect here, the biological aspect of the human brain development. हमारे brain का एक particular part होता है frontal cortex which develops during this. अब अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था. Now that part starts developing. Now because of this fact, there are certain executive functions that are dependent on that particular part of the brain, like the planning, the prioritizing, the impulse control. All that is dependent on it. That's how the cognitive, the thinking style also changes. तो अभी तक जो physical changes आ रहे हैं और जो emotional changes आ रहे हैं due to the hormonal development, changes in the adolescent's body, that has a cumulative effect on the identity development process. So this makes the individual explore. वो experimentation करता है, explore करता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि मेरे interest किस तरफ है, मेरी strengths क्या है, मेरी weaknesses क्या है, and during that process of exploration, the child or the adolescent, it goes through certain phases. The first is identity moratorium. इसमें मतलब बहुत सारे exploration किया हुआ है हमने, बहुत सारी activities, बहुत सारे roles को try out करता है वो individual, and then so to find out what is suitable for me, what is the best choice for me, and then it leads to identity achievement. So now the child has understood that this is my strength and this is my weakness. Now the child will have a perspective that okay, these are the areas where I need to improve upon. Then but there is high chance अगर exploration नहीं किया गया है या उसको exploration करने की opportunity नहीं मिली है, maybe because of various other factors, so the identity may diffuse. उसमें ऐसा हो सकता है कि उसका कोई strong opinion ही develop ना हो पाए, कोई strong conviction ही ना हो उसमें. So in that stage we would call the identity is diffused. So some people they don't know what they are inclined towards, what are their hobbies, and they just live their life in a mundane manner. So this is because identity is not developed properly, it is diffused. And in some cases identity foreclosure भी बहुत possible है. इसमें जैसे किसी family में business run हो रहा है, तो there are high chances कि parents pressure डालें या वो एक environment ऐसा develop हो जाएगा, the child also gets inclined to joining into that family business, not even recognizing and exploring what are actually my strengths, क्या मुझ में वो qualities है business run करने के लिए. So it happens because of various factors. So यहाँ पे identity foreclosure हम इस stage को कहेंगे जिसमें exploration कम है और commitment भी low है. We often hear stories and see people around us who say that they work for 15, 20, 25 years in a profession and then they say that I have never enjoyed my work. मैं 5 बजे के बाद ही अपना life enjoy करता था या करता. So it is because identity foreclosure has happened. The person has not explored enough during the adolescence age. Because adolescence age is the bridging age. It lays the foundation for the adults. Therefore, this is a very important
प्रोसेस, आइडेंटिटी डेवलपमेंट प्रोसेस, एंड और इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है. अगर मैं ये कहूँ कि हर स्टिमुलस, वेदर द स्टिमुलस विच वी आर एक्सपीरियंसिंग consciously or subconsciously, everything has an influence on this process of identity formation. So ये गलत नहीं हो, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग ही चलता रहता है. We keep evolving, but the process starts during adolescence. Next slide, please. Yeah, and since parents are the कहना चाहिए, they are the building blocks for this identity formation process. तो उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है. अगर पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, आर्गुमेंटेटिव एनवायरनमेंट है, then the process of identity formation will definitely get affected. So the kind of parenting style, the kind of conversations happening in the family, that is very, very instrumental in the process of identity formation. The association of the child with the siblings, with the extended family, all that also has a very deep impact on the process of identity formation, because it leads to clarity of certain personal goals and interest. तो ये ability का develop होना बहुत important होता है for developing the clarity about what is my role in the future, how I am able to associate with my family, with my society, जैसे कि मैम ने कहा अभी. सो इसके लिए जो करंट लाइफ में जो भी बच्चा कर रहा है, जो भी करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या हॉबीज में वो जो चॉइसेस जो वो बना रहा है, वो एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव अगर बच्चे में डेवलप हो रहा है, सो दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, एंड उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे बच्चे के फ्यूचर पे पड़ेगा. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सम चिल्ड्रन हैव इट, they develop that maturity because of various other factors, and mostly because of the parental influence. जिन पेरेंट्स के गोल नहीं होते हैं कुछ, उनमें ऐसा देखा जाता है गाइडेंस जहाँ पे कम मिलता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, वहां पे ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो एबिलिटी है वो कम होती है. पीयर सपोर्ट इन दिस एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस चाहिए होता है. दैट्स अ काइंड ऑफ नीड, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड इन दिस एज. देन ये बाकी जितने भी फैक्टर्स यहाँ आपको पीपीटी में दिख रहे हैं, इनको मैं एक कॉमन टर्म देना चाहूंगी, कलेक्टिविज्म. अभी तक जो हमने बात की वो थी इंडिविजुअल फैक्टर्स. अब कलेक्टिव फैक्टर्स कि वो बच्चा उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी में जो वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो द हायर चांसेस आर दैट द टीनेजर विल आल्सो इम्बाइब दोज वैल्यूज. वो कौन से एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, बिकॉज ऑल दैट विल अल्टीमेटली लीड टू सर्टेन काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर identity of this individual. So it will also lead to vocational commitment, because there are certain societies जहाँ पे, से हमारी सोसाइटी में भी देखा जाए तो अभी भी, though we have lot of career information, but still doctor, engineer and then certain professions, इन सबको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. एंड ऐसे ऐसे किसी फैमिली में भी ये हुआ, कमिटमेंट अ चाइल्ड इज मेकिंग, दैट आल्सो इज इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट for vocational choices that the child is making. That also influences the identity formation process. Then environmental stresses, जैसे अगर हम मीडिया इन्फ्लुएंस की बात करें, तो मीडिया इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा है इस जनरेशन में, और इसका बहुत डीप इम्पैक्ट है. एवरी चाइल्ड नाउ इज टेक फ्रेंडली, और बहुत रेडिली अवेलेबल है उनके पास ये मोबाइल एंड इंटरनेट यूज. अब एक जरूरत भी बन गया है, और इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है. So all these factors have a very deep impact on the identity formation process. Yes, ma'am. We can move ahead, ma'am, to the next question. We would also like to know how to develop a healthy identity development, and it's a request to the speakers who are being a part of the conversation to please keep it precise. So the question is for Kalpana, ma'am. As Sarita has already explained it very nicely, how identity formation takes place during adolescence and how it helps them. So similarly, we can say healthy identity development, if we want to give a healthy identity to the learners, what we have to do, especially parents and teachers, their role is really very important. They need to set healthy boundaries,
to the adolescent, so that they can have those opportunities in which they can express themselves. If we cannot give them a opportunity, we are not setting them the boundaries, they will not able to express and they are hiding us. वो अपने आप को सामने लेके नहीं आएंगे, अपनी बात रखना नहीं समझेंगे कैसे रखना है. अगर हमने उन्हें ये मौका दिया तो उनमें वैल्यू डेवलपमेंट भी होगा, और वैल्यू डेवलपमेंट होगा तो वो डिसीजंस, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएंगे, उन्हें ये समझ में आएगा व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम. If we will say this is right and this is wrong, then they will not understand. If we give them opportunities to decide something, to take decision, and if those decisions are wrong, they can understand this is wrong and I will not repeat this again. And if we will say, they will not understand. So we have to set healthy boundaries. We need to give them opportunities. So values can be developed and they can appropriate or the right decision. Self-awareness. For this also, we need to give them space, so that they can aware from everything. Emotional intelligence. As we have already discussed, this age is full of energy. Emotions are at a very high rate. We need to understand them. उनको समझने की जरूरत है. Don't hurt them. Just trust them. Whatever they are doing is right under the limited boundaries. Then only emotional development can take place among them. Flexibility. This is a very important parameter or the aspect for healthy development, identity development. Why? If we are rigid, again their personality is hampered. So we need to understand them. We need to give opportunity to them. We need to help them, support them, be with them at every level in a flexible way, so that they can develop their identity. और अगर मैं ये यहाँ पे कहूँ कि बच्चे को, एडोलसेंट बच्चे को स्पेशली, अगर हम वो समय दें, उसके साथ फ्रेंड की तरह रहें. जैसे आपको पता है, हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल तक मदरली एटीट्यूड होना चाहिए, फिर एलिमेंट्री फादरली एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन एडोलसेंट एज में जो एटीट्यूड है वो है फ्रेंडली एटीट्यूड. अगर वो हमारा दोस्त, हम उसके दोस्त बनते हैं, वो खुल के बात करेगा, उसकी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से निखर के सबके सामने आएगी और हमें उसकी हेल्दी आइडेंटिटी मिलेगी. तो अगर हेल्दी आइडेंटिटी हमें किसी भी किशोरावस्था के बालक में क्रिएट करनी है, उसे डेवलप या फिर इनकलकेट करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो उसमें बाधाएं हैं, यानी उसमें जो रेड फ्लैग्स हैं, उन्हें पीछे छोड़ा जाए या फिर उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए. सारिका मैम, वेरी क्विकली आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस एस्पेक्ट. So the red flags can be not committing to anything. There's no sense of direction, and there's no exploration, and there's no desire to have any new experience also. This could be because of the reasoning ability not being developed properly, the analytical ability not being developed properly, because of the lack of opportunity or because of certain conflicts. So the impulse control is not there, and the child is very, very irritable, and see, self-esteem is the root of identifying the red flags. So if the self-esteem is low, then that will reflect in the confidence, that will reflect in the behavior, that will reflect in the choices the child is making. So we have to identify this, and we also have to identify there could be certain cases where the conditions like the ADHD and certain kind of learning disorders, till the age of adolescence it may happen कि वो identify ही ना हो पाए, वो diagnose ही ना हो पाए, और वो फिर adolescence age में जो behavioral issues होते हैं और जो learning issues हमें बच्चे में देखने को मिल रहे हैं, वो सब मिलके बहुत ही complex situation हो जाती है. And the parent, the teachers and the people around, they are not able to identify the root cause. So we need to go to the root cause. We need to actually sit and talk with the person, with the teenager, and we need to give autonomy. अगर बच्चा मिस्टेक्स कर रहा है तो उसको टिक ऑफ करने से बेटर होगा कि हम उसको ये बताने की कोशिश करें कि इससे क्या सीखा जा सकता है. So allowing the mistakes to happen and sitting and having conversation with the child so that the child doesn't get withdrawn, because ये बहुत likelihood chances हैं कि वो
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में विड्रॉ करे, वो शाये हो जाए या वो एक्सप्रेस ही ना करे। तो जैसे मैम ने कहा, सेल्फ एक्सप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। सो वो एक यहाँ एक फैक्टर होता है। अगर बच्चा एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है, विड्रॉन है, डिस्टेंट है, या वो किस फॉर्म में Ma'am, due to paucity of time, I'll have to request you to please wind up your words. जी जी। So extreme rebellion or extreme obedience, that is also a sign of it's unhealthy identity development. And negative identity, sometimes there's a lot of anger because the choices that the child is wanted to make, वो जो expectations है सोसाइटी की, फैमिली से, उससे बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। तो वो हमें एक मॉनिटर करने की जरूरत होती है, कहीं वो तो नेगेटिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन तो नहीं होगा। These are the red flags. Thank you so much, ma'am. And very quickly, Kalpana ma'am, now it's a small request to you to share more details about what are the roles and responsibilities of our parents and teachers in providing a healthy environment with reference to fostering identity development in adolescents. Actually, identity agents means the parents, family, and the society, and the teachers. Our role is really very important in healthy identity development of adolescents in many aspects at every level. For that, what we have to do, as Sarika madam has pointed out, two very important red flags, that is low self-esteem and negative identity. अगर इन दोनों पैरामीटर्स को सोचा जाए तो यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा नेगेटिव क्यों अपने बारे में नेगेटिव सोच रहा है। उसका सेल्फ स्टीम अगर लो है तो उसको कैसे हाई नहीं कर सकते। तो बैलेंस सेल्फ स्टीम हम लेके आए कि वो अपने बारे में अच्छा सोचेगा तो लोगों के बारे में भी अच्छा सोचेगा, वो फील अच्छा करेगा तो लोगों को भी अच्छी फीलिंग देगा। और इस दोनों को ठीक करने में, नॉर्मलाइज करने में फैमिली का और टीचर का बहुत अहम रोल है कि कंटिन्यूसली उसके साथ रहें, उसका दोस्त बने, उसको बार बार फीडबैक दें। फीडबैक हमें इस तरह से देना है कि उसको फील भी ना हो कि उसे कुछ कहा गया है, इतना पॉजिटिव वे में उसके साथ रह के उसको समझाना है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। इट्स अ नो डाउट इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज दिस टाइम it is very difficult to deal adolescents. They are having different kind of personality as we have at our adolescent age. So we need to understand it. It is a period of transformation. सब कुछ बदल रहा है, उन बच्चों को समझने की जरूरत है। And I request all the parents who are watching this show and the teachers, please give time to the adolescents, understand them, trust them, give opportunities to them so that they can become a noble citizen of India. जी मैम, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ साझा की। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर कल्पना मस्की का और प्रैक्टिसिंग काउंसलर सारिका रघुवंशी मैम का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों जितने भी पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ज़रूर आप इसे याद रखेंगे और इन पर अमल करेंगे। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के सहयोग सत्र में और तमाम बेहतरीन कार्यक्रम जो हम आप तक पहुँचाते हैं eVidya चैनल्स के माध्यम से। इससे पहले कि सत्र को यहीं विराम दें, एक विशेष जानकारी। यह जानकारी NCERT की विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से जुड़ी हुई है। सो एज यू ऑल नो दैट फॉर द academic year 2023 to 2024, NCERT textbooks are available all across the country and you may purchase them directly from the different sales counters of NCERT. और यदि आप फिजिकली इन बुक्स को खरीदने की बजाय इन्हें ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, यानी PDF और सॉफ्ट कॉपी वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके भी तमाम माध्यम हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए कर सकते हैं। इसके प्रति अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए NCERT की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ncert.nic.in पर जाएं, लॉगिन कीजिए और साथ ही विशेष जानकारियां प्राप्त कीजिए। एक बार पुनः हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे, साथ ही आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए eVidya चैनल्स। आप हमारे रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं और ये तमाम सत्र आप इंजॉय कर सकते हैं NCERT ऑफिशियल पर भी और eVidya चैनल्स के माध्यम से भी। नमस्कार। सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें
टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।